each one of you. Before I start this session, I would like to quote Rashid Ogunlaro. The right word at the right time will unlock the door to treasures. The wrong one will close it forever. This quote tells us that in a conversation, using right word at the right time is very important. There are ample number of things that make a conversation lively and interesting, and one of them which we are going to discuss in this session is the use of proverbs. Proverbs are short traditional sayings that express some obvious truth or familiar experience. In other words, they are wise words of advice. People who speak fluent English often make the use of proverbs. And use of proverbs adds style to your English communication, makes you sound fluent. Proverbs को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मुहावरे. विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं, जिसमें सच्चाई, तजुर्बा, अनुभव व्यक्त किए जाते हैं. मुहावरों का उपयोग हिंदी भाषा को दिलचस्प बनाती है. इसी तरह अंग्रेजी भाषा में भी प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करने से अंग्रेजी भाषा और भी रोमांचक हो जाती है. तो क्यों न हम दोनों भाषाओं के मुहावरे पर नजर डालें? The most common proverb: empty vessels make the most noise. This proverb is said to mean that people who talk a lot about their knowledge, talent, or experience are not as knowledgeable or talented as they claim to be. Or we can also say an empty-headed person is always more talkative and noisy. So, empty vessels make the most noise. And this proverb, it teaches us not to speak unnecessarily about things we do not know. Now we'll use this proverb in a sentence. Foolish people chatter constantly. As the saying goes, empty vessels make the most noise. अब इस इंग्लिश प्रोवर्ब का हिंदी में क्या मुहावरा है? थोथा चना बाजे घना. अब इसका मतलब ये है कि जब चना अंदर से मजबूत होता है, यानी उसमें फलबीती होती है, तो वह जमीन में उग सकता है. अगर वही चना अंदर से थोथा हो तो वह एक पौधा नहीं बन सकता है, और अंदर से थोथा होने के कारण वह बचता बहुत है. अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण न हो और वह अपने भी गुणों के होने का दिखावा करता है, तो उसे थोथा चना बाजे घना कहा जाता है. तो इस मुहावरे को वाक्य में हम प्रयोग करेंगे. रवि अशिक्षित है लेकिन खुद को ज्ञानी बताता है. सच है, तोता चना बाजे घना. The next proverb: many hands make light work. You all will agree that people can do things more quickly and easily when they work together. A task is soon accomplished if many people help. Now let's form a sentence. I request all of you to help me to move all this furniture, as many hands make light work. अब हिंदी मुहावरा. एक से भले दो, अर्थात जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम आसान और जल्दी होता है. इस मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे. घर की सफाई हम सब मिलकर करेंगे तो आसान होगा. सच है ये कहावत, एक से भले दो. The next proverb: too many cooks spoil the broth. Broth means soup consisting of vegetables, meat. This proverb means that if many people are involved in cooking a particular dish, each might add a different ingredient, which in the end spoils the entire dish. If too many people are involved, the task will not be done well. It may spoil the final outcome. This proverb
Too many cooks spoil the broth. It contradicts the previous proverb. Many hands make light work. Now we'll use this proverb in a sentence. We should not allow many people to get involved in this project as too many cooks spoil the broth. Now the same proverb in Hindi, समान मुहावरा हिंदी में, जहां मिले 5 माली वहां बाग सदा खाली. जहां बहुत सारे माली एक साथ मिलते हैं वहां बाग या बगीचे में कुछ नहीं उगता. अब हम वाक्य बनाएंगे. यहां काम में अकेला करना चाहता हूं क्योंकि जहां मिले 5 माली वहां बाग सदा खाली. The next proverb, an idle mind is a devil's workshop. A person's mind devoid of noble ideas is known as devil's workshop, where destructive ideas will take place. A person who has nothing to do will be tempted to do unproductive and mischievous acts. So it is very important to keep our minds constructively occupied. Now a sentence using this proverb. Keep the children occupied during holidays, as an idle mind is a devil's workshop. Now in Hindi, okay, Hindi में मुहावरा. खाली दिमाग शैतान का घर. अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन खाली बैठा है, कोई काम नहीं करता है, तो उसके दिमाग में अनेक तरह की बातें चलने लगती है, जिसके कारण वह कभी कभी दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा या शरारत करने लगता है. अब इस मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे. छुट्टियों में बच्चों को व्यस्त रखो क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है. So dear friends, if you want to make your conversation lively and meaningful, try to use proverbs. It makes you sound fluent and interesting. Proverbs have been, are, and will always be timeless. Dear friends, if you like this video, share it with others and please post your comments. Happy learning!